Yesterday we did, in our first class, we did all the introduction of chemistry, and today we will go forward doing certain topics. Now yesterday what all did we do? Let's revise. We did all the scientists, the important scientists which we had done. Then we did all the important branches and analytical chemistry and specialized branches of chemistry. Then we went forward in the next topic. We did all the important phenomenon like deliquescence, efflorescence, etc. Now today we are going to extend our introduction to the next topics. So the next topic of today is alloys. We had done yesterday that elements, they can be classified into metals, non-metals and metalloids. Okay, now there are certain metals which do not have a very good property of tensile strength, or maybe they are brittle, or they can be easily broken down into pieces, as a result of which they cannot be used for many important purposes. Therefore what we do is we mix the metals, make it into a homogeneous mixture, and that homogeneous mixture it is known as alloy. तो अगर हम alloy को define करें तो alloy क्या हुआ? Alloy is anything which can be a mixture of metal with metal. If two metals they are combining, then metal and metal, that is an alloy. Another mixture can be made with metal and a non-metal. One metal and another one that is a non-metal, and the third alloy can be made with a mixture of a metal with a metal and a non-metal both. So we're going to just see a few examples, and the rest of the examples are given in your notes with its percentage composition of each component which is present in the alloy. The first example which we are taking over here, that is brass. Brass जो है वो एक alloy है कॉपर और जिंक का, राइट? सो कॉपर जो इसमें है वो 60 to 80% प्रेजेंट है, और जिंक इसमें 20 to 40% प्रेजेंट है. एप्लीकेशंस अगर हम इसकी देखें तो ये यूज होता है टू फॉर्म यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स. इसके लिए ब्रास को हम यूज करते हैं. Second example we can take, these are the common ones which I am discussing over here. Second one is bronze. Bronze जो है, it consists of copper, one component is copper, which is 75 to 90%, and the other one is tin. So both are metals over here. Tin is 10 to 25%. 10 to 25%. Another one which is very important is stainless steel. Now where all is bronze used? It is used in making coins. It is also used in making utensils. Then the third one is stainless steel. Stainless steel consists of iron, which is 89.4%. It consists of chromium 10%. It consists of manganese 0.25%, and a non-metal carbon which is 0.35%. 0.35%. So carbon over here may range anything between 0.25 to 0.35. Stainless steel, as you know, it is very extensively used. It's an improvised version of iron. Iron में rust लग जाता है, और stainless steel में rusting नहीं होती. तो improvisation of the metal iron that is done by using chromium, manganese and carbon. It is used in making utensils and also for ornamental pieces. Right? So this is what alloys are. Then the next topic which we are going to do today, that is very important, measurements in chemistry.
measurements in chemistry. जब मेजरमेंट्स केमिस्ट्री में शुरू हुए तो बहुत सारे यूनिट्स दिए गए थे। जैसे हमने स्टार्ट किया, अभी जो हम यूनिट सिस्टम यूज करते हैं दैट इज द एसआई सिस्टम और द सीजीएस सिस्टम। बट इससे पहले जैसे जैसे मेजरमेंट्स, बिकॉज कुछ भी आपको केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कुछ भी आपको करना है तो मेजरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट भी करना है तो हाउ मच ऑफ द लिक्विड यू हैव टू पुट, उसकी हमको वॉल्यूम मेजर करनी पड़ेगी। इन अ सिमिलर मैनर अगर हमको डिस्टेंस देखना है या हमको लेंथ देखनी है या हमको रेडियस एटम का फाइंड करना है तो उस पे भी मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सो लेट्स जस्ट फ्रॉम हिस्ट्री कौन-कौन से यूनिट्स यूज होते थे, पर काफी यूनिट्स हैं जो कि अब यूज नहीं होते, उनको देखते हैं। द फर्स्ट वन दैट वाज नोन एज द इंग्लिश और एफपीएस सिस्टम। FPS system is no longer in use, पर पहले ये यूज होता था जहां पे F जो है that stands for foot, P stands for pound and S stands for second. So ये measurements जो थे foot for distance, P for mass and S for time. This was used before but it is no longer used. The second one was MKS system. MKS system. MKS over here, M stands for meter, the unit for distance, K stands for kg, the unit for mass, and S stands for second, the unit for time. So this basically is a decimal system. It is also known as a decimal system. It is used but it is rarely used these days. थर्ड जो था इसमें जो कि हम काफी एक्सटेंसिवली यूज करते हैं that is the CGS system. CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो सेंटीमीटर है, यूनिट ऑफ मास ग्राम्स है और यूनिट ऑफ टाइम जो है दैट इज सेकेंड्स। तो इसको हम लोग यूज करते हैं, पर जब सबसे एक्सटेंसिवली सिस्टम जो यूज हम करते हैं दैट इज द SI सिस्टम, दैट इज इट इज नोन एज इंटरनेशनल system of units. International system of units. SI system में 7 basic units include किए गए हैं। These 7 basic units, इनको हम क्या बुलाते हैं? They are known as fundamental units, और जिसके प्रॉपर्टी के ये यूनिट्स हैं, जिन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बेसिकली ये जो सारे यूनिट्स हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के यूनिट्स हैं। तो जो प्रॉपर्टीज जिसके ये यूनिट्स हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, उसे हम बुलाते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, राइट। ये जो यूनिट्स हैं ये एक क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये मैटर की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज से हम लोग बाकी प्रॉपर्टीज को और बाकी यूनिट्स को डिराइव करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर दीज फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, और इन 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स बुलाते हैं। कौन कौन से हैं ये? लेट्स सी। द फर्स्ट वन दैट इज डिस्टेंस, और it can also be taken as length. The unit of the SI unit of distance or length, it is taken to be meter. और जो सिंपल हम इसके लिए यूज करते हैं that is small m. Okay? The second one is mass. Mass,
इसका जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम्स and the symbol is kg. The third one is time. Fourth is temperature. Fifth is current. Sixth is luminous intensity. And the seventh one is amount of substance, right? So we know that the unit for time is second and the symbol used would be small s. Temperature का unit is SI, unit is Kelvin. Symbol is K. The unit for current is ampere. Symbol is A. The unit for luminous intensity is candela. इसको आप capital A or you might be seeing in some books AMP is also written, right? Luminous intensity का है candela and the symbol is CD, and then amount of substance ka is mole and the symbol is MOL, mole, right? So these are certain fundamental properties. Before we go on to the derived properties, you need to know that there are certain submultiples and multiples whose values it is essential for you to know, because whenever you are going to do the conversions या कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो इन मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की आपको मेजरमेंट पता होनी चाहिए. सो लेट्स गो ऑन टू सब मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स. Sub multiples, right? So sub multiples में we have the prefix. What is the prefix used? The second is submultiple की value, the value of submultiple, right? For example, in a certain question, अगर आपको prefix दिया गया है deci, right? So deci means the value of submultiple that is 10 raised to power minus 1. For example, अगर हम deci normal solution ले रहे हैं, तो deci normal solution का मतलब क्या होगा? 1 by 10 normal solution. The submultiple which is used that is 10 raised to power minus 1. Similarly, अगर हम deciliter ले रहे हैं तो deciliter क्या होगा? Deciliter again will be 0.1 liters. ठीक है? So you are using वहाँ पे submultiple हम use कर रहे हैं 10 raised to power minus 1. The second one that is centi. Centi is the value is 10 raised to power minus 2. फिर उसके बाद आ गया मिली. मिली is 10 raised to power minus 3. मिली के बाद जो नेक्स्ट आता है that is micro. For micro the symbol is mu and it is 10 raised to power minus 6. Micrometer means 10 raised to power minus 6 meters. Then next is nano. The symbol is N. 10 raised to power minus 9. Pico. The symbol is P. 10 raised to power minus 12. Femto. Femto is symbol which we use is F. It is 10 raised to power minus 15. And then after that is atto. Atto is the symbol which we use is A and it is 10 raised to power minus 18. Atto.
After atto comes zepto. Zepto symbol is Z and zepto is 10 raised to power minus 21. And the last one is yocto. Yocto symbol is Y. And the sub multiple is 10 raised to power minus 24. In a similar manner, we also have multiples. These are the sub multiples. Then we also have multiples, right? Multiples are, the first one, prefix which is used is deca. Deca, that is equal to 10. Value is 10. Hecto. Hecto is 10 raised to power 2, which is 100. Okay? Then kilo, 10 raised to power 3 or 1000. And after kilo we have mega. Mega is 10 raised to power 6. After mega comes giga. Giga is 10 raised to power 9. And giga के बाद आता है टेरा. Tera is 10 raised to power 12. And after tera comes peta. 10 raised to power 15. Peta. And after peta is exa. 10 raised to power 18. Zeta. Zeta is 10 raised to power 21. And iota. Raised to power 24. So these are the multiples and sub-multiples which you need to know, right? Now as we have just done कि हमने क्या किया अभी हमने करा fundamental properties. अब उन fundamental properties से जिन properties को हम derive करते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं derived properties. और जो उसके units होंगे उनको हम क्या बुलाएंगे? They are known as derived units. So let's common derived properties. Some common derived properties and their units. The first one which we are going to discuss is area. Now what is area? Area, you know, it is equal to length into breadth. Both are length only, breadth and distance इस पे हम cover कर रहे हैं. तो units दोनों के meter होंगे. Therefore the unit of area, that is going to be meter into meter square. So meter square जो है, because it is derived from meter. Therefore this is a derived unit. Another example which you can take is volume. These are the easy ones. Volume is A cube, or you can say length into breadth into height. The unit of each is meter. So ये क्या आ जाएगा? Meter cube. Okay? फिर उसके बाद आ गया एक और easy लेते हैं. Density, mass upon volume. Right? So इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? kg per meter cube. Because mass की यूनिट kg है, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब है, तो डेंसिटी की यूनिट क्या आ गई? kg per meter cube. Let's take force. Force that is equal to mass into acceleration. Ma, mass into acceleration. The unit for mass is kg and the unit for acceleration is meter per second. So the unit for force is kg meter per second
and 1 kg meter per second, that is equal to what? It is equal to Newton. So generally जो हम यूनिट फोर्स के लिए यूज करते हैं, that is going to be Newton, N, right? फिर after force we come to pressure. Pressure is defined as force per unit area. So we can put it like this: force per unit area. The unit of force we have taken over here, it is kg meter per second square. And the unit of area, that is equal to meter square. So when you calculate this, what is going to be the unit? It is going to be kg per meter per second square. Okay? And this unit 1 kg per meter per second square, this is known as pascals. Pascal, the abbreviation जो कि हम यूज करते हैं इसके लिए, it is PA, Pascal. So ये हो गया हमारे कुछ derived units, right? So इसी तरह से आपके कुछ और examples notes में दिए हुए हैं which you can calculate. Now what happens is कि जब भी हम लोग measurements करते हैं तो measurements में जितनी भी calculations दी गई होती हैं उसमें हमें it is essential for us, sometimes it is essential for us to convert them from one unit to the other, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको डेंसिटी जो है वो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है और हमको कोई भी कैलकुलेशंस डेंसिटी के साथ करनी है तो हमें या तो डेंसिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी पर मीटर क्यूब में, या जो भी और क्वांटिटीज दी गई हैं उनको हमें इस वाले फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक जू में जा रहे हैं और वहां पे आपने 20 डिफरेंट एनिमल्स देखे, राइट? अब 20 डिफरेंट एनिमल्स को आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि मैंने 20 हॉर्सेस देखे, बिकॉज वो 20 हॉर्सेस नहीं थे. मे बी देयर वर 10 हॉर्सेस, देयर वर 5 काउज, देयर वर 2 बफलोज और व्हाटएवर. दिस इज जस्ट अ कॉमन एग्जांपल. तो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू कि आप गधे और घोड़े को उन दोनों को हम इकट्ठा क्लब करके एक ही उसके अंदर कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते. इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे भी हमको इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस कि हम यूनिट्स की कन्वर्जन करें, और उन यूनिट्स की कन्वर्जन हम कैसे करते हैं? बाय अ फैक्टर जिसको हम कन्वर्जन फैक्टर बुलाते हैं, राइट? सो लेट्स सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स और कैसे हम यूनिट्स को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे जब हम केमिस्ट्री में मेजरमेंट्स करेंगे. उसे हम लिख देते हैं एज इंफॉर्मेशन सॉर्ट, राइट? इंफॉर्मेशन सॉर्ट, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसे हम कैलकुलेट करेंगे एज information given into conversion factor. Before we go on to certain examples, कुछ conversion factors मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ. For example, 1 mile. Okay, 1 mile that is equal to 1.6 kilometers. This is the conversion factor. That 1 mile that is equal to 1.6 kilometers. In a similar manner, 1 calorie. Calories को हम joules में generally express करते हैं. Then that is equal to 4.184 joules. 4.184 joules. फिर उसके बाद ये कुछ important units discuss कर रही हूँ. 1 electron volt. 1 electron volt is equal to 1.602 into 10 raised to power minus 19 joules. Generally energy को हम लोग joules में ही represent करते हैं. तो electron volt also is a unit of energy. 1 electron volt that is equal to 1.602
into 10 raised to power minus 19 joules. फिर उसके बाद ये भी एक important factor है AMU, atomic mass unit. One atomic mass unit that is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg. 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg. Then अगर joules को हमें erg में convert करना है तो 1 erg is a smaller unit. 1 joule is equal to 10 raised to power 7 ergs. ठीक है? फिर उसके बाद डाइन भी एक यूनिट है, फोर्स का यूनिट है ये. 1 डाइन दैट इज इक्वल टू 10 raised to power minus 5 newtons. minus 5 newtons. Then pressure का यूनिट पास्कल के अलावा एटमॉस्फेयर भी है. 1 atmosphere that is equal to 1 into 10 raised to power 5 pascals. Right? प्रेशर के और भी यूनिट्स हम यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल we use 1 bar. 1 bar that is equal to 1.00, sorry, 1 atmosphere is equal to 1.008 bar. 1 atmosphere is equal to 1.008 bar, right? mm भी यूज करते हैं हम. So 1 atmosphere that is equal to what? It is equal to 760 mm of mercury. 1 atmosphere is equal to 760 mm of mercury. So these are a few conversion factors. तो कुछ हम लोग करते हैं, इसमें कुछ examples करते हैं. जैसे let's go on to the first example. The question is convert 5 calories into joules. 5 calories into joules, right? So what is the conversion factor of calorie into joule? 1 calorie that is equal to 4.184 joule. तो किस तरह से हम करेंगे कि 1 calorie is equal to 4.184 joule. So unit factor क्या हुआ? 1 would be equal to, according to the unitary method, 1 is equal to 4.184 joule divided by 1 calorie. This is going to be the unit factor over here. So we have to convert 5 calories. Therefore, 5 calories will be equal to what? 4.184 joule upon 1 calorie into 5 calories. So ये calories और calories they cancel out. So answer इसका क्या आ जाएगा? When you multiply this, it comes to 20.90 joules. It is coming to 20.90 joules, right? Let's take another example. Convert 15-liter atmosphere. Your question is convert 15.0 liter atmosphere into ergs. Let's first see what is the conversion for this. 1 liter atmosphere that is equal to 1.01 into 10 raised to power 9 ergs. Right? This is the conversion unit. अब conversion factor हम इससे निकालेंगे. That is 1 will be equal to, according to unitary method, 1.01 into 10 raised to power 9 ergs divided by 1 liter atmosphere, ठीक है, into 15 liter atmosphere. So again liter atmosphere and liter atmosphere that cancels down
and your answer comes to 15.2 into 10 raised to power 9 ounce. Is it clear? So this is how the conversions they are done. Okay, we are going to do significant figures, accuracy, precision, and plus we will also start with the laws.